Now today I'm going to cover a next topic and it is a practical. The topic is fluorescence activated cell sorting. So friends, this is also called as fluorescence assisted cell sorting, and this is one kind of flow cytometry. So as we know what is the purpose of flow cytometry, just to detect and sort different cell in according to their size or according to their granularity. So likewise here we are also performing the same thing. We are separating different cells according to their size and granularity. The fluorescence activated cell sorting contains basic principle is that the cell are having different markers, especially if we are talking about the B cell. It contains different type of antibodies. These antibodies attached with a specific antigen. So on the basis of above given said antibodies, we have to target these antibodies and we have to separate according to their marker which are present on the B cell. What we have to do, we have to add fluorescent material. So as we know what is a fluorescent material are those material which absorb a small wavelength and emit larger wavelength of light. So we attached this fluorescent material to a particular antigen, and when the particular antigen binds with a particular antibody, it will give fluorescence, and that fluorescence is detected by the flow cytometer. So flow cytometer is a basically a machine. It passes uh, a laser light, okay, and in the presence of uh, uh, this laser light, when it passes through a sample. So this is a cuvette and it contains sample. The laser light is passes through it. It passes, if in the form of parallel, it gives some fluorescence. So it is actually not cuvette, it is a chamber where we have to pass our cells. So some scattering is there and we measure the scattering as well as the fluorescence, and if the laser beam passes through the cell and uh, it has some refraction and leads to uh, change in the direction of the light. So if there is a uh, forward or parallel scattering, we measure cell size, and if there is any perpendicular or refraction of the light is there, it is just due to granularity of the cell. So there are two things: when the light passes from the cell and it is scattered, it measures cell size, and when light passes to the cell and it refract back, it measures granularity of the cell. So for example, the neutrophil is more granulous than the B cell. So definitely, if there is more scattering and more perpendicular refraction, it measures the granularity of the cell. Now, activated cell sorting is a separate branch to deal only the study of hematopoiesis, oncology, and stem cell biology research. So we are not calling it as a flow cytometry, but we are calling it as a fluorescence activated cell sorting because it is useful for the study, especially for the branch of hematopoiesis, oncology, and stem cell biology research. So under this practical we have to separate and isolate
CD5 B cells. CD5 positive B cells is to be identified with the help of fluorescence activated cell sorting system. So these are the following materials which are required during our experimentation. These are also the items which are required, and it was a continuation of previous one page. So this is the procedure to collect CD5 positive cells, B cells from peritoneal cavity. Uh, so we have to sacrifice mouse with the cervical dislocation. Then we have to peel out the skin with the help of incision, and finally we have not to uh, pierce the peritoneum. Lift up the peritoneum and inject the ice cold staining medium. Ice cold staining medium with a 10 ml syringe equipped with 25 gauge needle, 5 by 8 inch needle. ओके, तो इस प्रोसीजर में ध्यान देना होता है कि जब हम मीडियम को वापस से रिकवर करेंगे तो रिकवर करने के टाइम पर उस मीडियम के साथ में आरबीसी ना आ जाए, और इसके लिए हम थोड़ा सा पेरिटोनियल कैविटी का जेंटल मसाजिंग कर लेंगे, और मसाजिंग करके हम पिपेट से वापस से इस मीडियम को, जो आइस कोल्ड स्टेनिंग मीडियम हमने डाला है, इसको रिकवर करेंगे और ध्यान रखेंगे कि एरिथ्रोसाइट्स ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि एरिथ्रोसाइट रप्चर भी हो जाते हैं, तो इसके कारण हमारी जो पूरा प्रोसीजर है वो अफेक्टेड होता है। So then we have to again pipette this media from peritoneal cavity, and this suspension is to be filtered with the nylon mesh square, and is to be collected in the 15 ml polypropylene conical centrifuge tube. यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि इसको हमेशा पॉलीप्रोपिलीन ट्यूब्स में ही रखा जाता है, क्योंकि CD5 पॉजिटिव बी सेल्स जो होती है वो दूसरे प्लास्टिक सरफेस के साथ एडर हो सकती है, इसलिए वी आर यूजिंग पॉलीप्रोपिलीन इंस्टेड ऑफ अदर प्लास्टिक्स। देन सेकेंड प्रोसीजर है हाउ टू रिकवर CD5 पॉजिटिव बी सेल्स फ्रॉम स्प्लीन। So we have to remove spleen from the mouse, and it should be kept in petri dish. Then add about 10 ml of ice cold staining medium. Uh, then what we have to do, that we have to use two microscopic glass slide. On that one slide is used for the fixation of spleen, and the second one is used to peel out the capsule of the liver cell, from the spleen cell. So after removal of that capsule, we have to gently rub the surfaces of spleen, but before the rubbing, we have to put it into the ice cold staining medium. This ice cold staining medium is used to recover the B CD5 positive cells. So after gentle rubbing, we have some cells that is in suspension of ice cold staining medium. Now we have to filter it with the help of 1 inch nylon mesh square and collect in 15 ml polypropylene conical centrifuge tube. Now this centrifuge tube is used because, as we know, that the CD5 positive cells adhere to the other plastic surfaces. That's why we are using polypropylene tubes. Now the next step will be centrifugation of the cell at 350 gram, or we have to say that 1200 rpm for 10 minutes at 4 degrees centigrade. Then aspirate the supernatant and resuscitant cells by flicking tubes. तो हमें जो we are taking the aspirants first, so the aspirant is required. तो सॉरी, हमें एस्पायरेट का यूज़ नहीं करना है, जो सस्पेंडेड सेल पैलेट है इसका यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन सेल पैलेट्स को हम लाइसिस करते हैं
with the help of अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन से लाइसिस होने पर इसके बाद हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यहाँ कंसनट्रेशन है 1.5 ml ऑफ आइस कोल्ड 0.165 मोलार अमोनियम क्लोराइड। ये 2 मिनट्स के लिए हम करते हैं। देन इसके बाद में लाइसिस हो जाने के बाद हम वापस से इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ट्यूब को, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में अल्टीमेटली फिर से हम इसके अंदर स्टेनिंग मीडिया, आइस कोल्ड स्टेनिंग मीडिया 100 माइक्रोलीटर तक डालते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है ट्राइपेन ब्लू सॉल्यूशन से ट्राइपेन ब्लू एक्सक्लूजन। So trypan blue exclusion method is a separate thing and it is a separate practical। यहाँ पर पेरिटोनियल सेल का जो फाइनल डाइल्यूशन होता है वो हमें 1:10 बनाना होता है, यानी कि 1 माइक्रोलीटर हमारा पेरिटोनियल सेल होगा तो 100 माइक्रोलीटर हमारा 10 माइक्रोलीटर हमारा ट्राइपेन ब्लू सॉल्यूशन होगा। और अगर हम स्प्लीन का बनाते हैं तो स्प्लीन सेल का हमारा 1:100 फाइनल डाइल्यूशन होगा, यानी कि अगर हमारा 1 माइक्रोलीटर स्प्लीन सेल है तो लगभग 100 माइक्रोलीटर हमारा ट्राइपेन ब्लू सॉल्यूशन होगा। सो इट इज़ अंडर द आइस कोल्ड स्टेनिंग मीडियम, ऑल द प्रोसीजर्स टेक्स प्लेस इनटू द आइस कोल्ड मीडियम स्टेनिंग मीडियम। देन हम विद द हेल्प ऑफ ट्राइपेन ब्लू एक्सक्लूजन मेथड से जो सेल कैलकुलेशन करते हैं वो फाइनल होना चाहिए 3 to 6 इंटू 10⁶ पेरिटोनियल सेल्स। एंड स्प्लीन सेल की बात करें तो 1 to 2 इंटू 10⁸ स्प्लीन सेल्स होना चाहिए फ्रॉम 2 to 4 months ओल्ड बाल सी माइस। तो इस टाइप से हमारा जो एलिकोड का कंसंट्रेशन है वो 1 × 10⁷ होना चाहिए या फिर 1 to 10 × 10⁷ होना चाहिए। और अब हम इसका फ्लोरोसिटेनेटेड एंड बायोटिनेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होगा वो एंटीजन के साथ बाइंड होगा और जो बायोटिन होगा वो एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होगा। नाउ अगेन वी सस्पेंड दिस सेल into 1 ml of staining medium on the ice, और फिर हम बाद में इसका फिल्ट्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर। फिर इसके बाद में ये जो सेल पैलेट रहता है इसका फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और वापस से इसको हम रीसस्पेंड करेंगे इन द आइस कोल्ड स्टेनिंग मीडियम। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 10x प्रोपीडियम आयोडाइड। प्रोपीडियम आयोडाइड क्या करता है कि जो भी डेड सेल्स होती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर भी बहुत सारी सेल्स डेड हुई हैं, तो प्रोपीडियम आयोडाइड क्या करता है कि ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेल प्रोसीजर जो डेड सेल्स होती हैं उसके न्यूक्लियस को ये स्टेन कर देता है प्रोपीडियम आयोडाइड। एंड दैट्स वाई ड्यूरिंग द सेल सॉर्टिंग हमें क्लियर हो जाता है कि कितनी सेल लाइव है और कितनी सेल डेड है। तो डेड सेल्स भी होती है वो एक्सक्लूड आउट हो जाती है और उनका सॉर्टिंग नहीं होता, वो भी अलग हो जाती है। सो आफ्टर बोथ ट्रीटमेंट विद द प्रोपीडियम आयोडाइड एंड ऊपर जो हमने पहले ही फ्लोरोसिडेनेटेड एंड बायोटिनाइलेटेड ट्रीटमेंट किया था, तो इसको करने के बाद में नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म सेल सॉर्टिंग इन द फ्लो साइटोमीटर। तो with a particular gates and at a particular temperature, it is 0 to 4 degree centigrade for few minutes। और इसमें ये देखा जाता है कि जो सेल सॉर्टिंग का रेट है वो 1 to 2 इंटू 10⁷ सेल्स पर आवर होता है, 1 to 2 इंटू 10⁷ सेल्स पर आवर होता है। तो अगर हमें सेल्स को रिकवर करना है, मतलब इट्स डिपेंड ऑन द फ्लो साइटोमीटर। हो सकता है कि हमने फ्लो साइटोमीटर में हमारा सैंपल डाला, सेल्स डाली, देन इट विल बी गेट डिस्टॉर्टेड, इट विल बी गेट डिस्ट्रॉयड। तो इट डिपेंड्स ऑन फ्लो साइटोमीटर मशीन कि हम हमारा सैंपल फिर से रिकवर कर सकेंगे या नहीं, या केवल हमें एनालिसिस करने को मिलेगा, और या फिर हम हमारी सेल से हमारा सैंपल रिकवर कर सकते हैं या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन ऑल अबाउट द मशीन। If we have to recover it successfully, so the recovery procedure is like that
कि जितनी भी cells जो recover हुई है, that is more than 5 into 10 power 5 cells, so it should be put into a small volume of 0.1 to 0.2 ml of RPMI 1640 1640 solution. This is a cell culture solution जिसमें जितनी भी sorted cells हैं वो viable रहे और recover हो जाए. अब इस पूरी प्रोसीजर में भी बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो डेड हो जाती हैं. देन वी हैव टू अगेन एड स्टेनिंग मीडियम कंटेनिंग 10 माइक्रोग्राम पर ml प्रोपिडियम आयोडाइड. So we have to take 20 microliter of cell sorted sample and 1:10 with staining medium containing 10 microgram per ml प्रोपिडियम आयोडाइड. तो 20 माइक्रोलीटर ये रहेगा. तो अगर ये 1:2 का प्रोपोर्शन हम 1:10 का प्रोपोर्शन अगर हम रखते हैं तो 200 माइक्रोलीटर के आसपास जो है हमारा प्रोपिडियम आयोडाइड रहेगा विद द स्टेनिंग मीडियम. अब जब हम स्टेनिंग मीडियम में और विद द प्रोपिडियम आयोडाइड हम चेक करते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं स्टैंड हो चुके होते हैं. सो वी हैव टू एनालाइज दैट कितना जो है सेल लाइव बचा हुआ है. और इसी बीच हमें 70% हमने जो पहले इथेनॉल डाला था उसको भी रिमूव करना होगा ताकि जो भी इथेनॉल इसमें है वो उड़ जाए, चला जाए. और ये देखा गया है कि जो एक्सेप्टेबल प्योरिटी है वो मोर देन 95% होना चाहिए. सो हियर वी हैव टू चेक एक्चुअली द प्योरिटी ऑफ द सैंपल. नाउ फाइनली कंक्लूजन क्या है? एक्चुअली द FSCs is a very versatile technique because it is used for the study of oncology, for the study of stem cell, for the study of uh, hematology and hematopoietic analysis, and for the different stages of uh, cells with the help of their presentation of marker, their expression of marker. So now it is very popular and it is now used in a different clinical and research lab. So what is the advantage? Advantage is the recovery of the cells is about 50 to 70%. So it has a positive rate, and what we have to recover, that is about 50 to 70% uh, cell, sorted cell is to be recovered. तो यहाँ पर हमको CD 5 पॉजिटिव सेल्स जो चाहिए थी फ्रॉम बी सेल वो हम सॉर्ट कर पा रहे हैं. एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज? तो डिसएडवांटेज ये है कि दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट रिक्वायर हायर स्किल्ड पर्सनल. सेकेंड, थर्ड है द स्पीड ऑफ सेल सॉर्टिंग इज़ वेरी लो, it is very slow. So these are the main disadvantage of this FSC. So friends, thanks for watching this practical. Hopefully you can understood the main gist of this topic. Thanks for watching.